Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. कैमरा ऑन कर लीजिए अपना. Your camera should be always on. Good evening, ma'am. Good evening. So we were discussing the postmaster. Any questions which you have, you may ask. I am sharing what I would suggest. Yeah, you read it. इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा. चलिए, please somebody read this. Without wasting any time, The postmaster decides to teach Ratan to read, and she learns quickly from him, eager to become literate. literate. इसका मतलब क्या हुआ? However, एक मिनट. किसके घर से आवाज आ रही थी? यहाँ से पढ़ो. Despite his small salary. यहाँ से पढ़ो तुम. चलो. Despite his small salary, चलो पढ़ो. मैम इसको हाईलाइट कीजिएगा. क्या चीज? यहाँ से पढ़ो ना. Despite the हाँ, यहाँ से पढ़ो. हाईलाइट का मतलब Ratan begins to think of the postmaster family as her own, but the postmaster continues. एक मिनट, आप बोल्ड करना चाह रहे थे ना. अच्छा, जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिए. Despite his small salary, मतलब उसकी सैलरी बहुत कम थी, उसके बावजूद the postmaster asks the orphaned village girl named Ratan to complete housework for him. उसकी सैलरी कम थी, फिर भी उसने कहा कि रतन को कि तुम थोड़ा बहुत मेरे घर का काम कर दिया करना. For which she received some of his food. जिसके बदले वो क्या देता था उसको? हाँ, भोजन देता है. भोजन खाने पीने का. हाँ. Food. Yes, please read. Ratan is 12 or 13, impoverished and unlikely to get married, likely because she lacks a dowry. Nonetheless, the postmaster's loneliness leads him to strike off a conversation with Ratan
even though her class status is distinct from his. The two recount stories from their child and they become close. Talking late into the night, Ratan begins to think of the postmaster's family as her own, but the postmaster continues to long for a close companion to abate his loneliness. Ma'am, abate means क्या होता है? अपनी लोनेस तो अपनी एकाकीपन को खत्म करने के लिए। और रतन के अलावा as a mere stand in for हाँ, और रतन के अलावा वहां पर कोई था नहीं, इसीलिए वो रतन से ही बातें किया करते थे। ठीक, पढ़िए। The postmaster decides to teach Ratan to read and she learns quickly from him, eager to become literate. However, the continual presence of heavy rainwaters in Ullapur causes the postmaster to become ill and thou Ratan nurses him back to health. To think his illness and loneliness with feminine tenderness, he decides that he has to leave his post in the village. After he is denied a transfer to another village, he quits his job altogether. The postmaster explains to Ratan that he is departing Ullapur, devastating her. इसका मतलब क्या हुआ? The postmaster decides to teach Ratan. तो वो एक पढ़ा लिखा इंसान था और बहुत खाली समय उसके पास था. So what does he do? He decides to teach Ratan to read and write, and she learns quickly. और वो बहुत जल्दी सीख रही थी, because इसलिए कि वो चाहती थी कि लिटरेट बनना, पढ़े लिखे बनने का उसको बहुत शौक था, इसीलिए उसको पढ़ाई में मन लगता था और उसको शौक था पढ़ने का. However, the continual presence of heavy rainwater in Ullapur causes the postmaster to become ill. और बहुत तेज बारिश में वहाँ रेनी सीजन के समय में क्या हुआ, हर जगह पानी भर गया और जिसके वजह से पोस्टमास्टर क्या हुए, he became ill. ill का मतलब होता है बीमार पड़ गए. And though Ratan nurses him back to health, और रतन के कोशिश से वो ठीक तो हो गए, soothing his illness and loneliness with feminine tenderness, और वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की. He decides that he has to leave his post in the village. और फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि उन्होंने लिखा एक ट्रांसफर लेटर, लेकिन ट्रांसफर लेटर उनकी रिजेक्ट हो गई, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया वहां से, और वहां से वो जाने की he thought of leaving Ullapur. After he is denied a transfer to another village, he quits his job. Quit का मतलब होता है छोड़ दिया उन्होंने. He quits his job altogether. The postmaster explains to Ratan that he is departing. और वो रतन को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ. Departing मतलब कि he is going. Devastating का मतलब उसको बिल्कुल दुखी करके गए. दुखी कर. Devastating मतलब होता है दुखी करके जाना. Somebody else read? Yes, madam. हाँ पढ़िए. कहाँ से मैडम? हाँ पढ़िए. कहाँ से मैडम? जिस पर जहाँ तक वो पढ़िए उसके बाद. करके पढ़ो. disparate से मैम ना. हाँ. Disparate Ratan asked the postmaster to take her home with him, and the postmaster replies with disbelief. How could I do that? The postmaster assures Ratan that his replacement will look after her as he has, but Ratan finds
no comfort in his word, declaring that doesn't want to stay in Olapur without him. The postmaster then tries to give Ratan a sum of money, his left over salary, but she refused the payment failing. Fleeing. तो डेस्परेट हो गई, वो परेशान हो गई, वो उदास हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई जब पोस्टमास्टर ने कहा कि आई एम लीविंग ओलापुर। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई, डेस्परेट हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि पोस्टमास्टर उसको अपने साथ ले जाए, और वो पोस्टमास्टर के फैमिली में भी अपने आप को शामिल करना शुरू कर दिया था उसने। तो रतन आस्क्ड द पोस्टमास्टर टू टेक हर होम विथ हिम। वो बार बार आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आई वांट टू गो विथ यू, लेकिन पोस्टमास्टर उसको बोलता है कि तुमको मैं कैसे ले जाऊं, हाउ कैन आई डू दैट। द पोस्टमास्टर अश्योर्स रतन, और फिर वो अश्योर करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको संतावना दिलासा दिलाते हैं कि अगला जो पोस्टमास्टर आएगा वो तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह से करेगा। लेकिन रतन बोलती है कि उलापुर में मुझे नहीं रहना है, जब आप ही चले जाएंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, डिक्लेयरिंग दैट शी डजंट वांट टू स्टे इन उलापुर विदाउट हिम। द पोस्टमास्टर देन ट्राइज टू गिव रतन सम ऑफ मनी, और फिर उसने सोचा कि कुछ पैसे उसने अपनी जर्नी के लिए निकाल लिया, और बाकी सारे के सारे सैलरी उसने ही वांटेड टू गिव रतन, बट वो क्या हुआ, बट शी रिफ्यूजेस द पेमेंट, और पेमेंट को रिफ्यूज करती है। फ्लीइंग का मतलब होता है वहां से भाग जाती है। पढ़ो। यस, सबरी रीड, पढ़िए। The postmaster travels by boat to Calcutta and recalls Ratan's grief-stricken face, which speaks a great, inarticulate, universal sorrow. He realized that he cannot go back to her, and he ponders the many separations and many deaths that pervade life. Ratan left behind in Ulapur nurses a faint hope that the postmaster might return, but Tagore's narrator reflects that humans cling with both arms to false hope, even in the most dire of situations, suggesting that Ratan's hope is utterly fertile and ultimately cannot sustain her in the face of tragedy and loss. चलिए इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं हम। कुछ वर्ड हैं जो आप लिख लेंगे। द पोस्टमास्टर ट्रेवल्स बाय बोट टू कोलकाता, और फिर वो वहां से निकल पड़ते हैं, उलापुर से वो बोट पे आके बैठ गए हैं, और द बोट इज मूविंग टुवर्ड्स कोलकाता, और पोस्टमास्टर याद करते हैं उसका चेहरा, ग्रीफ स्ट्रिकन फेस मतलब दुख में डूबा हुआ चेहरा याद करते हैं वो उसका, रतन का, which speaks a great inarticulate universal sorrow। और जो कहते हैं आंसू से तो कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन आंसू एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर के दुख को व्यक्त करने में काम आ जाता है, यूनिवर्सल सॉरो। He realizes that he cannot go back to her। फिर वो समझते हैं कि वो वापस नहीं उसके पास जा सकते हैं। And he ponders that, और वो फिर सोचने लग जाते हैं कि जिंदगी तो many separations का कहना है। many separation मतलब कि लोग मिलते हैं, कई लोग से मिलते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं। मैम और पॉन्डर्स का मतलब क्या क्या पॉन्डर्स का पॉन्डर्स सोचना, थिंक, ओके मैम। ही थिंक्स, और वो लाइफ की फिलॉसफी पे आ जाते हैं कि मिलना और बिछड़ना तो लगा रहता है। मेनी सेपरेशन, कई लोग मिलते हैं और कई लोग बिछड़ जाते हैं, और डेथ एक परमानेंट सेपरेशन है, एंड मेनी डेथ्स, so many people die, that is a permanent separation।
दैट प्रिवेल्स लाइफ, जो कि जिंदगी में, जिंदगी के साथ मौत भी चलती रहती, लाइफ एंड डेथ इंसेपरेबल है। रतन लेफ्ट बिहाइंड इन उलापुर नर्सेज अ फेंट होप, और उधर रतन एक बेकार की उम्मीद पाल रखी है। फ्यूटाइल होप मतलब बेकार की उम्मीद कि शायद पोस्ट मास्टर उसको आके ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। और टैगोर कहते हैं कई बार इंसान भी एक झूठी उम्मीद के साथ जिंदगी बिता देते हैं। क्लिंग विद बोथ आर्म्स टू द फॉल्स होप, मतलब दोनों हाथ में लोग मुट्ठी बांधे रहते हैं, कोई होप जो कि कभी, उम्मीद जो कि बर नहीं आएगी, उम्मीद जो कि कभी सामने सामने से लोग समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। फॉल्स होप, झूठा दिलासा, वो झूठी उम्मीद पे लोग जिंदगी बिता देते हैं। इवन इन द मोस्ट डायर ऑफ सिचुएशंस सजेस्टिंग दैट रतन्स होप इज अटरली फ्यूटाइल, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि रतन का जो होप था वो भी बिल्कुल बेकार था, वो बेकार की उम्मीद को लेके बैठी हुई थी। एंड अल्टीमेटली कैन नॉट सस्टेन हर इन द फेस ऑफ ट्रेजेडी, और वो कुछ काम नहीं आएगा इस वक्त भी जब वो बहुत दुख में है, ट्रेजेडी में है, लॉस में है। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि वो पोस्ट मास्टर वहां से चले गए हैं, और लॉस क्या है? वो अपने बड़े भाई को खो देती है, मतलब कि उसको दादा बना बुलाती थी, बड़ा भाई बुलाती थी, और उस होप, इस सिचुएशन में भी ये उम्मीद कुछ काम का नहीं उसका होता है। सो बेकार का जो उम्मीद लगा के बैठी है वो उसका बेकार हो जाता है। So this was the story, the postmaster. अब कोई पढ़िए थीम क्या है इसका? What is the theme of the postmaster? The theme of this story is gender class inequality. In the जेंडर second का मतलब वो क्या होता है? मैन एंड वुमन, मेल एंड फीमेल। क्लास का मतलब वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लिटरेट क्लास, इलिटरेट क्लास। जेंडर कौन? जेंडर थीम क्या है? द लिटिल गर्ल, लिटिल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एंड द पोस्ट मास्टर। और क्लास का यहाँ पर है, लिटरेट क्लास है द पोस्ट मास्टर, इलिटरेट क्लास है तो विलेजर्स और गांव वाले और रतन। और इनइक्वालिटी कहीं मैच नहीं था। इनइक्वालिटी मतलब कि उसका क्लास अलग था, उसका स्टेटस अलग था, और रतन का स्टेटस अलग था, और गांव वालों का स्टेटस भी अलग था। सेकेंड थीम जो इसका है, मेलैंकली एंड सबलाइम नेचुरल वर्ल्ड। मेलैंकली का मतलब होता है सैडनेस। मेलैंकली मीन्स सैडनेस। painful sadness. यस, सैडनेस। तो द पोस्ट मास्टर भी हमेशा सैड रहे। अंत में रतन भी तो सैड हो गई थी। तो सेंट्रल थीम में आ जाता है, सैडनेस भी है कि हर वक्त उसको घर की याद आती थी, और हर वक्त वो चाहता था घर चला जाए। और पहला ही लाइन जो टैगोर लिखते हैं कि ही फेल्ट लाइक अ फिश विदाउट वाटर, तो इट वाज ऑलवेज सैड। एंड नेचुरल वर्ल्ड, और दूसरा चीज जो थीम था जो इसका आता है सैडनेस के साथ साथ, नेचुरल वर्ल्ड, मतलब कि नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है? रेन, बारिश, और जब मौसम अच्छा होता था तो पेड़ के नीचे बैठ के लिखा पढ़ा करते थे, तो नेचुरल सराउंडिंग में उसको बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स, और वो बातें करना कम पसंद करते थे, और वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के समय बिताना ज्यादा उनको अच्छा लगता था। और यहाँ पर अर्बन एंड रूरल लाइफ भी है। मतलब अर्बन लाइफ क्या मतलब? शहर शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी। बार बार ये कंपेयर करते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ की सड़कें ऐसी होती है, वहाँ का घर ऐसा होता है, वहाँ का मौसम ऐसा होता है, और यहाँ लाइफ, गांव का लाइफ और शहर का लाइफ। तो द कंपैरिजन इज ऑलवेज देयर थ्रू आउट द थीम स्टोरी में। इस कंपैरिजन को लेकर द पोस्ट मास्टर के दिमाग में चलता रहता है। एंड फाइनली द लास्ट थीम इज मीटिंग एंड पार्टिंग, मिलना और बिछड़ना। तो किस तरह से वो रतन से मिले, और किस तरह से उनकी लाइफ आगे बढ़ी उलापुर में, और किस तरह से पार्टिंग, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग एंड पार्टिंग, मतलब मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का एक रीत है। फाइनली द थीम इज मीटिंग एंड पार्टिंग। इसमें आपको शो करना पड़ेगा किस तरह से मीटिंग एंड पार्टिंग है यहाँ पर।
किस तरह से वो ओलापुर में वो मिले उससे, और किस तरह से एंड में वो बिछड़ गए। और टैगोर का मतलब क्या होता है, व्हाट डज ही एक्सप्लेन, व्हाट लेसन डू वी सी दैट यस मीटिंग एंड पार्टिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, कि मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का एक एक रीत। अंडरस्टूड? नाउ रीड द एनालिसिस ऑफ द पोस्टमास्टर। पढ़िए। Somebody read. Analysis. The postmaster, a young man from Calcutta, earns his first job working at a post office in a small rural village of Kolhapur. Near the post office in an indigo factory owned by a British manager who helped to establish the new post office. The postmaster feels out of place in Kolhapur and he works in hut next to the pound that is covered in weeds and surrounded by jungle. He is more educated than the indigo factory workers, who are the only other men he can socialize with, but they are too busy to spend much time with him. And because of him upbringing, he is arrogant and uncomfortable around them. The postmaster has little work to do in Kolhapur, and he sometimes spend his free time writing poems, which express the joy to be found in observing nature. However, he is ऑब्जर्विंग नेचर, नेचर को देखना उनको पसंद था। However, he is half dead in Olapur. Despite its natural beauty and his beliefs, he could come alive again. If a genuine out of an Arab legend would cut down all of the trees in Olapur, construct a street and erect tall buildings. तो वो इसमें ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल हाफ डेड के थे, बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह थे उलापुर में, और वो बोलते हैं कि वो इंसान बन जाएंगे और अलाइव हो जाएंगे जब कोई एक परी या कोई जिन एक छड़ी घुमा देगी और इसको उलापुर से कोलकाता बना देगी, तब वो फिर जीना शुरू कर देंगे। और यहाँ भी कोलकाता की तरह स्ट्रीट हो जाएंगे और कोलकाता की तरह बिल्डिंग हो जाएगी, तब वो कोई ये नहीं कर सकती, कोई दिव्य शक्ति वाला कोई कर सकता है, लेकिन अभी तो उनको लग रहा है कि वो आधे मरे हुए टाइप्स। चलो, जीनी का मतलब होता है कोई जिन या कोई ऐसी आत्मा जो कि जादू कर सकती है। रीड। Because his salary is low, the postmaster has to cook his own meals. How he hires an orphan village girl, Ratan, to do housework for him, compensating her with a share of his foods. In the postmaster view, Ratan is not likely to get married. At night, when intoxicated singers from a nearby village gather to sing, disrupting the evening silence, the postmaster goes inside his hut and light a lamp and call Ratan. Ratan call back, "What is it's Dada Babu? What do you want?" Ratan insists that she must light the kitchen fire, but the postmaster tells her to get his hockey ready. He then asks if she remembers her mother. Ratan remembers some things about the childhood, but other things she doesn't. She remembers that her father loved her more than her mother, and her father worked all day long. As Ratan tells the postmaster about her childhood, she approaches him and ends up sitting on the ground by his feet. She also recalls her younger brother and how the two of them would pretend to catch fish with sticks from trees. This is a memory she can recall in more detail than other memories. The postmaster is not used to rural life in Wolapur, which sharply contrasts with the upbringing in urban Calcutta. Not only he is confronted with people of the entire different class status, uneducated low-level workers, but he must work in a rustic build covered hut. From the रस्टिक outside, रस्टिक का मतलब होता है कि बिल्कुल
रस्टिक पीपल, रस्टिक मतलब कि गांव वाला परिवेश पूरा था वहां पर, पक्का घर नहीं था, पक्का छत नहीं था उस रस्टिक वीड कवर्ड हट. हाँ. The postmaster class status and urban background complicate his settlement in Olapur. कॉम्प्लिकेट मतलब उसका जो Complicate. स्टेटस था और यहाँ का जो सेटअप जो था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रहा था इसके माइंड को. Immediately suggesting a deep division between urban and rural life, as well as between lower and upper classes individuals. Although Olapur's natural landscape is cute, primed for the description एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत अच्छा. एक्सक्विजिट. in poetry. The postmaster still longs for modernized urban life, even though the postmaster finds the natural world in a rural Bengal beautiful. He can't help but to prefer urban surrounding, the setting more familiar to him. Ratan is a lower class status than the postmaster, and as a woman who is unlikely to be married, she is limited to performing menial labor for the men who employ her. According to the rules societies states along the lines of the class and gender, Ratan can only receive the opportunities in the life from wealthier men. Now these are the several restricted and she is not compensated fairly for her level. मतलब उसके साथ ऐसा था, वो ऑर्फन था और वो डिपेंडेंट थी जो उसको एम्प्लॉय करेंगे, मतलब नौकर बन के जिंदगी बिताना था उसको. और वो भी उसको जो पैसे मिलने वाले थे वो भी उतना पैसा नहीं मिलना था जो जो जितना वो काम करती थी. Ratan and the postmaster began to develop a relationship, suggesting that they might be able to overcome their distinct class status and find unity through sharing their experience. Ratan began to feel comfortable enough with the postmaster to physically approach him, while previously she would stand at a distance from him or linger outside of his house. And to share childhood memories with the postmaster despite her subservience to him. सबसर्वियंस मतलब दोनों में डिफरेंसेस था, फिर भी वो उसको सुनती थी, बात करती थी और उसको she used to feel comfortable in his company. Excuse me. Yes. Ma'am, disturbance. डिस्टर्बेंस किसके घर से हो रहा है उसको तो अपने खुद से बंद कर देना चाहिए माइक्रोफोन. बताना क्यों पड़ रहा है हमको बार बार. किसके घर से आ रही है आवाज? 147. Ma'am, 147. 147 को समझ में आ गई होगी तो माइक्रोफोन को म्यूट करिएगा, रखिएगा अपना. Now the character of the postmaster. Analysis of the postmaster. Somebody read this. पढ़िए उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में. The postmaster, known only by his job title, never by his actual name, is a young Indian man from Calcutta, employed as a postmaster in Ulapur, a rural Bengal village. The postmaster comes to Ulapur after the British owner of an indigo dye factory in Ulapur asked to government to install a post office there. This is an institution that will modernize Ulapur, providing the isolated village with a means of contact with the outside world. Because the postmaster is from Calcutta, a large city, he feels out of place in rural
Ullapur, and he is a bad mixer. He does not know how to क्या मतलब होता interact है with. बैड मिक्सर? बैड मिक्सर का मतलब होता है वो किसी से मिलजुल के बात नहीं कर पाते थे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे थे और उनको पता नहीं था कि ऐसे लोग से जो पढ़े लिखे नहीं उनसे कैसे बात की जाए. He does not know how to interact with the other men in Ullapur, indigo factory workers who are poorly educated, unlike the postmaster, and too busy with their own work to spend time with him. The postmaster has little work to do and earns a meager salary in his मीगर free सैलरी का मतलब होता है कम सैलरी, लो सैलरी. in his free time. He tries to write poetry through his feels somewhat dis- disillusionized with the themes डिसइल्यूजन मतलब कभी कभी वो अपने ही भ्रम में चले जाते. with the themes of his own poems. He writes about the transcendent ट्रांसेंडेंट ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब beauty वो of नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे. nature in Ullapur, yet he would prefer to be in urban Kolkata with its impressive paved roads and high rises. Out of boredom and loneliness, the postmaster develops a relationship with Ratan, and an orphan who helps him with housework, and he begins to share stories about his life with her. He also begins to teach her how to read. However, the unending monsoons in Ullapur depress the postmaster and cause him to become ill. He quits his job and leaves Ratan behind in Ullapur, mm, offering her a significant sum of money out of guilt, which she refuses. अच्छा ये क्या गिल्ड, क्या उसका पश्चाताप क्यों हो रहा था कि वो उसको छोड़ के जा रहा है Yes, ma'am. और इसलिए वो उसको पैसे देना चाह रहा था, which she refuses. At the end of the narrative, the postmaster leaving Ullapur by boat reflects philosophically on his situation, comforting himself by thinking that there would be no point in returning to Ratan, since life is fleeting, always filled with death and separation. Though the postmaster does show kindness to Ratan, his own loneliness and sense of alienation एलियनेशन मतलब कि वो अकेलापन, वहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस एकदम, वहां के लिए वो अजनबी था. and purposelessness lead him to take advantage of the orphan girls on loneliness and isolation. Ultimately, the postmaster's urban educated background renders him incapable of understanding life and other people in Ullapur, making his return to Calcutta inevitable. Yes. Now the character of Ratan. और कोई पढ़ो. Ratan is a 12 or 13-year-old orphaned village girl who helps the postmaster with housework in return for a portion of his meals. Tagore's anonymous narrator notes that Anonymous narrator. anonymous narrator notes that it is unlikely that she will get married, suggesting that her future is black. She is lower class, lacks a family, and cannot marry out of her poverty.
poverty or find employment outside of menial household work. At first, reluctant to रिलक्टेंट मतलब होता है पहली पहली सबसे पहले उसको बात करने में हिचक होती थी, वो बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो बात करना उसको पसंद आने लगा. to interact with the postmaster, Ratan Yes, what? gradually. क्या पूछ रहे हो? मीनिंग मैम मेनियल का साइड ऑफ मेनियल हाउसहोल्ड वर्क. छोटे मोटे घरेलू काम को. अरे मैम. To interact with the postmaster, Ratan gradually begins to enjoy her conversation with her master, in which she recounts her own family background and begins to form affectionate imaginary pictures of the postmaster's own family life. Ratan also learns quickly from the postmaster lessons in reading and the alphabet. Eventually, Ratan comes to think of the postmaster as a father or husband, and she becomes dependent on his generosity and his conversations with her. She nurses him back to health after his sickness, staying awake at his beside all night long. Finally, after the postmaster has recovered and decides to leave Ullapur, Ratan asks him to take her home with him, essentially to adopt or marry her. The postmaster, incredulous rejections of this proposal, horrifies and embarrasses Ratan. After his departure, she wanders near the post office, weeping copiously, uh, destitute, lonely, and still uneducated. Ratan cannot leave the confines of Ullapur. Though she wishes desperately to, she has neither the freedom nor the philosophy of the postmaster, who can comfort himself in his grief with the knowledge that death and separation are an inescapable part of life. Ratan Top has no such knowledge and thus no such comfort. तो रतन कम्स बैक टू थिंक ऑफ द पोस्टमास्टर. तो वो उसके फैमिली में अपने को शामिल कर रही थी वो, एंड धीरे धीरे वो सोचने लगी थी कि ही विल टेक हर अलोंग और उसके फैमिली में शामिल हो जाएगी. और जो कि रिजेक्ट कर देता है पोस्टमास्टर कि तुमको आई कैन नॉट टेक यू होम. उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, एंड द पोस्टमास्टर वहां से उसको वीपिंग कॉपियसली, मतलब वो चला जाता है तो बहुत ज्यादा वो रोती है और वेट करती रहती है, लेकिन वो तो वापस आता नहीं है. डेस्टिट्यूट, लोनली एंड स्टिल अनएजुकेटेड. मतलब डेस्टिट्यूट मतलब होता है कि बिल्कुल टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ इंसान, अलोन, जिसका कोई नहीं होता है. लोनली मतलब अकेलापन, अकेला, एंड स्टिल अनएजुकेटेड. और अभी भी वो उसको पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, लेकिन उसको अभी भी अनएजुकेटेड ही थी वो. रतन कैन नॉट लीव द कन्फाइंस ऑफ कोल्हापुर. वो जा नहीं सकती थी, दो शी विशेस डेस्परेटली. वो चाहती थी यहाँ से निकल के चले जाना, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी. शी हैज नाइदर द फ्रीडम, वो फ्री भी नहीं थी और उसका फिलोसफी भी नहीं था जो मैच कर रहा था पोस्ट मास्टर के साथ. Who can comfort himself in his grief with the knowledge that, जो कि वो पढ़ा लिखा इंसान था, वो अपने आप को समझा सकता था, लेकिन बस जस्ट बिकॉज रतन वाज एन अनएजुकेटेड लिटिल गर्ल, तो वो अपने आप को समझा नहीं पाई इस फिलोसफी को कि मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का एक रीत. And this is a part of life. Ratan, though, has no such knowledge and thus is no such comfort.
इसलिए वो ज्यादा सफर कर रही थी, इसलिए वो ज्यादा पेन में थी, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने आप को इस ये फिलोसफी को समझ में नहीं आ रही थी. दिस इज द स्टोरी, रतन एंड द पोस्टमास्टर. अभी क्वेश्चंस है जो कि आपको करना है. Please read the question. If anybody can answer any question, please tell me. When postmaster had nothing to do, he decided to teach Ratan. What does this tell us about the postmaster? पोस्टमास्टर की कौन सी खूबी को ये सामने लाता है? हेलो, आंसर दिस क्वेश्चन. कौन सी क्वालिटी को सामने लाता है? आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, दोबारा पढ़ ली है रिवीजन में, एनालिसिस पढ़ लिया है, कैरेक्टर पढ़ लिया है रतन पोस्टमास्टर का, तो कौन सी क्वालिटी सामने लाता है बताइए? मैम वो मेहनती है. मेहनती तो नहीं ला रहा है यहाँ क्वालिटी. मैम काइंडनेस. कि पढ़ा लिखा इंसान चाहता है कि सब लोग पढ़े लिखे, उसकी अच्छाई, उसकी काइंडनेस, हिज नॉलेज, दैट ही वांट्स टू एजुकेट. नहीं भी पढ़ा सकता था उसको, लेकिन उसने चाहा, वो क्वालिटी थी कि वो खुद एक पढ़ा लिखा इंसान था और चाहता था, ही न्यू द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. हेलो, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए आप लोग. Read the next question and answer. Describe the character of the postmaster in Dagos, the postmaster. अभी आपने पढ़ा उसका कैरेक्टर. यस मैम. तो मैम वो सारा दिन लिखना पड़ेगा. सारा नहीं, आपके अनुसार क्या लगता है? आपने इसको जाना है, इस कहानी को जाना. What do you think about the postmaster? He is literate, kindness, think about nature. Example, He got bored. who will think to all the people who will not educated want to talk with those people who will as literate as him. Even the postmaster was an helping nature. That's why he helped Ratan. His nature also shows that he also shows that the meeting and parting is the philosophy of life. So if someone is educated, then they will understand that what the postmaster, why the postmaster decided to leave that place and why he had not taken Ratan with him. In what way did the postmaster try to entertain himself in Ullaipur? Did Ullaipur offers him good opportunities to pursue his hobbies? तो क्या करते थे खाली समय में वो? खाली समय में मैम वो देखते थे पेड़ों को, नेचर को, उनके बारे में Please poem. speak, please answer in English. English, okay. In What? his Okay, this is literature class, so why you are talking in Hindi? यस मैम. मैम ऐसा है तो फिर हम लोग साइंस के नहीं छोड़िए, ठीक है. क्या साइंस के? कुछ नहीं मैम. मैम the postmaster entertained himself in Ullaipur in his leisure time by writing poems, observing nature, and helping people, which was his job to. Did Ullaipur offers him a good opportunity to pursue his hobbies? Yes.
Ulapur offers him good opportunity to pursue his hobbies. Okay, ma'am, answer. Okay, as the postmaster's boat sailed, what thoughts entered his mind? मतलब क्वेश्चन का हुआ कि जब वो ओलापुर से निकल रहे थे तो जब बोट पे वो बैठ चुके थे तो वो क्या क्या बातें सोच रहे थे? What was he thinking? Suddenly he has think about to pick the Ratan with him. But now suddenly one more thing he has remembered that taking and parting is the part of life. That's why he not take the, and even at that time the mindset of the what the society is not free. That's why he not take Ratan with him. And even he he remember those things that can be what enjoy by him and Ratan in the Ola program. That's all. Okay, the next question. Write a character sketch of the postmaster. Do you consider him selfish? Give reason for your views. ठीक है, दूसरा part आप बताइए. Do you think he was a selfish man? No, he is not a selfish. He was not a selfish man. How? Because he was thinking not only about himself but about the girl too. If he had taken her to with him, there may be very chaos in his family. Yeah, And why is he there with a girl? yes, ma'am. The girl may suffer so much humiliation because he was low caste. हम reason दे दिए. No caste, no class, and even she is from the rural area. Yes. Sixth question. What thought did the postmaster have when he left? How were his emotions different from those of Ratan's? Did the emotions match? Was Ratan thinking were they on the same level? Were their thoughts similar, or how was it different? The first and last common emotion similar in them are sadness. The girl was feeling sad because he has been left by the postmaster, and the postmaster was sad because he has left her. But since he was illiterate, he make his mind by giving some reasons to it, but the girl was in deep sorrow and couldn't think anything. Question number 7. Examine the thoughts if you placed yourself in the place of postmaster in this story. Had you been on his place, what would you have done? You will do the same thing, ma'am. That is He also would have done the same thing. yeah. No, had I been in his place, I would have taken Ratan to my home. I would have done something different than what people expect me to do. But ma'am, at that time the society might depend, so I can't take her with him with me. But you have to be taking risks in life, no? At least one person's life would have been made better, no? But ma'am, if we compare that generation to this generation, then yes, ma'am, we can take her with our according to today's generation, ma'am. Because in today's generation, adoption is legal. That's why we can take. Let us come to the number 10. Who was Ratan and what happened to her in the end of the story? Ratan was an orphan girl, 12 or 13 years old, living in a village called Ulapur. What happened to her in the end of the story? She has been left
by the अब postmaster. यहाँ पर आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा. You will have to think about it. How can a young orphan girl, what are the problems that she might be facing? And being an orphan and a girl, what other complexities might she be facing? And what can happen to her in future? She was left all alone, and she was a woman, a girl who was growing up to become a woman. So बहुत कुछ उसके साथ हो सकता था. So her future was really dark, right? तो बहुत कुछ आपको infer करके लिखना पड़ता है. When you start inferring, you will start thinking. Keep yourself, supposing there's somebody whom you know and who is an orphan, a young girl. So literature connects you with life. Right? So वो सोच करके आप अपने लिटरेचर को, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं. You can think about any girl जिसका कोई नहीं है, जो अकेले है, or the problems a woman can have in a society, or a woman who is poor, a woman who is an orphan. So what kind of problems she may be facing, right? बहुत कुछ सोचने का रविंद्रनाथ टैगोर छोड़ जाते हैं. ये छोड़ गए हैं कि think about life as a story in itself. Each character is a story. Think about it. हम एक चीज हमको समझ में अभी तक नहीं आया है. क्या? जो कंपेनियनशिप दोनों में था, पोस्ट मास्टर और गर्ल में, Both enjoyed talking to each other. रतन was सबसे पहले reluctant होती थी, वो तो बात करना चाहती नहीं थी. बाद में वो enjoy करने लगी. It means she started getting close to the postmaster, and the postmaster को और कोई था नहीं, so she was the only person जिसकी वो बात करते थे. तो he was forced into her companionship. तो क्या समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा? बोलिए तब तो समझाएंगे. मैम वो सिर्फ अफेक्शन या फिर क्या? मैम एज अ जैसे वो केयर टेकर रिलेशन बिल्ड करते हैं, या फिर एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर? Not as a partner. He was not attached emotionally. वो सिर्फ वहां पर रहती थी, कुछ काम करती थी, और खाली समय में उसको पढ़ाते थे वो. That's it. There was no emotional relationship with them. अगर रहता emotional, तो he would not have left Ulapur. Or had he been emotionally involved with her, he would have taken her with him. ऐसा कुछ नहीं था. She was just a person who was giving him a company. That's it. मैम एनालिसिस में एक जगह लाइन था कि But this little girl, ये जो रतन थी, she started getting close to the postmaster. इसलिए वो जब पैसे भी दे, when he wanted to give her money, she refuses, and she only wanted to. आपने वो मूवी भी देखा था जिसमें वो पैसे दे करके वो जा रहा है, तो उसका वो पाँव पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं, मुझे अपने साथ ही चलो दादा बाबू. तो दादा बाबू is always a replacement of a brother. तो she wanted to be one in the family. जो वो already इतना सुन चुकी थी उनके family के बारे में कि वो अपने आप को भी identify करी थी. I am also one of the family members. So how can you think of leaving your family member behind? तो वो इतनी emotionally इतनी आगे बढ़ गई. But for the postmaster, she was just a little girl, a girl who was helping her with the household work. That's it. So there was no romanticism attached to in this story, in this relationship, but she was being involved. Guys, that's it for today. Yes, ma'am.